focus at this hour. An encroachment clearance drive by Kanpur police cost a vegetable vendor his legs after he was hit by a train while trying to pick up his belongings that were thrown on railway tracks by the cops. Now, gruesome visuals of the incident show the victim, identified as Irfan, writhing in pain as passers-by and cops wait for help to arrive. Now, the policemen were reportedly clearing the spaces illegally occupied by street vendors near a railway station in Kanpur. Now, a police head constable has been suspended and further investigation into the matter is underway. यहाँ पे ये हुआ हादसा कि वो लड़का टमाटर यहाँ पे लगाए हुए था और उसका राकेश दीवान सिपाही थे, उन्होंने उसका कांटा बांट तराजू यहाँ पे रेलवे लाइन पे फेंका। इसके बाद सादाब चौकी इंचार्ज भी थे साथ में और उन्होंने कहा नाम वो लड़का गया अपना कांटा वहाँ उठाने रेलवे लाइन से एलसी से पहिया चढ़ गया उसके ऊपर। तत्काल पुलिस के द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम उसको इलाज कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच के उनके परिवारजन से बात की गई और उनको बेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन दिया गया। We also have Manish Yadav joining us on the broadcast, who's of course continuing to get us the latest developments in this particular case. Manish, अगर हम बात करें इस इंसिडेंट के बारे में जो कानपुर में हुआ है, हमें बताइए what is the latest action that has come after the fact? On one hand, the police cop has been suspended. अभी तक जो प्रगति हो पाई है, एसीपी कल्याणपुर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। डीसीपी ने जांच के आदेश दिए थे। जो प्रारंभिक तौर पर प्राइमा फेसी जो दोषी पाए गए हैं, राकेश सिंह जो कि हेड कांस्टेबल है, इंदिरा नगर चौकी पर तैनात है, शादाब जो एक पुलिसकर्मी है, कांस्टेबल है, उसके साथ जाकर उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सब्जी वालों का सामान इधर उधर फेंका था। तो राकेश सिंह को दोषी पाया गया है, तो राकेश को निलंबित किया गया है। सरकार ने भी संज्ञान लिया था। कानपुर के जो कमिश्नर है उनसे बातचीत करके सरकार ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि कोई भी किसी भी तरह का अभियान चले, लेकिन किसी गरीब को परेशान न किया जाए। जो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसमें किसी गरीब को खामियाजा न भुगतना पड़े, इसके साफ तौर पर जिलाधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से कई बार जारी किए जा चुके हैं। और इस मामले में भी जब मामला संज्ञान में आया तो शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट तलब की गई। कमिश्नर ने जो कार्रवाई है उसका ब्यौरा शासन को भेजा है। एसीपी कल्याणपुर जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी और लोग दोषी होंगे, चूंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कुछ लोग जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनके भी बयान दर्ज कराए गए हैं और जैसा इनपुट होगा उसके हिसाब से पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Okay, thank you, Manish, for getting us the latest inputs on this particular story. But on our broadcast, we're also joined in by our guests, Dr. Kapoor Sharma, beg your pardon, the leader of BJP, Dr. Pankaj Srivastava, spokesperson of Congress, and Ghanshyam Tiwari, spokesperson of SP. I'll come to you first, Dr. Tina Sharma. You know, the visuals, of course, the gruesome visuals of this 20-year-old Irfan. Let's talk about the fact that even though it's an anti-encroachment drive, it is being done for, a purpose that is required. But it could have been done in a civilized manner. He's all of 20. He has his whole life ahead. What is your first reaction on the way this has been conducted? Gruesome and sad. It's the saddest part of our, the system, which is not being sensitive towards people. And some people definitely draw a line for us to understand and introspect that where are we lacking as a government. That is first thing I would like to say. And I'm definitely very sad for this guy who'd been selling tomatoes on the road. Probably he must be earning 100 or 200 or 300 rupees a day, but he has lost his legs and will not be able to work, for whole life now going forward, which is definitely sad because he is not the only person who will suffer on this. His family, kids, they will suffer, and my complete sympathies with him. I would also like to donate 1 lakh rupees to this guy very soon. I will be sending a check to him probably tomorrow sometime. Thank you.
All right, that is of course Tina Kapoor of the BJP giving us her first reaction, but I'll come across to Ghanshyam Tiwari, spokesperson of SP. First let's talk about the fact that what is happening in Uttar Pradesh, when such incidents come out, the fact that of course now they have taken action against, the police, but that's not enough to give justice to this 20-year-old Ghanshyam Tiwari. He has his whole life ahead of him, and this could have been done in a better manner. Good afternoon to you, the viewers, and my fellow co-panelists. This is gruesome beyond words, but when you talk about Uttar Pradesh, the nature of atrocities that are committed, as per the government data itself, 10 people die in custodial deaths almost every day in Uttar Pradesh, every week in Uttar Pradesh. So a state that has made its name in torturing and custodial deaths, a state that has made his name in fake encounters, a state that made its name in bulldozer as a way to demonstrate the might of the state, especially against the poor, vulnerable, and minorities. This is just one more crime in this torturous model of administrating, where the poor, weak, and minorities will not have a voice. I respect Tina Sharma, BJP spokesperson, coming out in support to the victim and their family. But there is a system in place that is whose strength is its atrocity on the poor and its ability to get away with it. Whether it is custodial death, whether it is fake encounters, whether it is bulldozers, or whether it is any everyday incidents of police atrocity on the poor or people who are in minority or people who are from opposite political party. And it also demonstrates the weakness of other institutions in the state to create the checks and balances and a dictatorial mission of the Chief Minister himself. Right, as you're pointing that out, I'll go across to Dr. Pankaj Srivastava. Pankaj Srivastava, talking about this entire incident, right? It is involving a 20-year-old, Irfan. In this particular incident, of course, this action that has been taken, that they have suspended the police constable. But obviously, if you look at it, the way it has been conducted, now that is not going to be enough justice. It's not that his legs are going to, come back. He has an entire family to support as well. What is your first reaction about this? देखिए, बेहद ये गंभीर घटना है और सहानुभूति की, बीजेपी प्रवक्ता ने जैसा बताया है, सहानुभूति की बैसाखी से एक नौजवान को पूरी जिंदगी चलना पड़े, ये सोचकर ही अफसोस होता है। पहले तो हम ये मांग करेंगे कि उसके जीविका का पूरा इंतजाम किया जाए, उसके लिए नौकरी का इंतजाम किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी। दूसरी बात यह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इरफान के साथ ही आज नहीं हुआ, 2 साल पहले दारागंज में प्रयागराज के नरोत्तम उर्फ पंचू नाम के एक ऐसे ही सब्जी विक्रेता को पुलिस ने पीट के मार डाला था। ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते हैं आमतौर पर, जहां पर कोई पुलिस वाला सब्जी का ठेला पलट रहा होता है या उसकी पुलिस वाले की गाड़ी सब्जियों पर चढ़ जा रही होती है। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पूरी मानसिकता है, जो उसकी क्रूरता है और सत्ता के संरक्षण में है, उसको दिखाता है। लेकिन मैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपके इस सम्मानित चैनल पर उठाना चाहूंगा कि देखिए, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका का अधिकार है और सरकार को कानून बनाना चाहिए। 2014 में कानून बना। अफसोस की बात यह है कि उस कानून का पालन, यानी अगर हम ये कहें कि विपक्ष की पार्टियां, सरकारें नहीं कर रही, तो एक बात समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी क्यों नहीं कर रही है। साफ उस कानून में कहा गया है कि हर टाउन में एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी, जिसके परामर्श के बिना, जिसके सहमति के बिना किसी भी तरह का अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा। शहरों में वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन बनेंगे, रजिस्टर किया जाएगा, जो वेंडर्स हैं उन्हें एक आई कार्ड दिया जाएगा और पूरी ये व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। ये मतलब संसद से पास कानून है। अभी 7 साल बाद जो एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है कि इस कानून का कैसा पालन किया गया है, तो उसने भी बहुत अफसोस जताया है कि ये कानून ठीक से पालन उसका हो ही नहीं रहा। तो असली समस्या ये है कि इस देश में जो सरकारें चल रही हैं, उनका रूल ऑफ लॉ पर कोई यकीन नहीं है, उन कानूनों पर भी कोई यकीन नहीं है जो उन्होंने ही बनाए हैं, उनके राज में बने हैं। ये कानून जो रेहड़ी पटरी संरक्षण अधिनियम है, वो 2014 में बना है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद उसकी रोशनी में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन संसद से बनाए गए कानून का पालन उत्तर प्रदेश में या तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां है वो करने को तैयार नहीं है। और पूरा जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया है वो दरअसल इस सरकार का गरीबों के प्रति जो रवैया है उसका ही एक तरह से प्रतिबिंबन है। आप उसमें पहचान सकते हैं कि आखिर ये सरकार गरीबों को लेकर क्या सोच रखती है। तो जिस तरह पुलिस लोगों को परेशान करती है, सिर्फ यही नहीं कि आज उसने एक नौजवान की टांगे छीन ली, हमेशा के लिए उसे अपाहिज बना दिया। हर हर पूरे जितने भी बाजार है, हर बाजार से वसूली एक ऐसी सच्चाई है। आप अपने रिपोर्टर से पूछिए, कहीं भी किसी भी जिले के रिपोर्टर से पूछिए, तो उसको इस जरूरत नहीं होगी कि उसका पता लगाए। वो कहेगा कि हाँ पैसा बंधा हुआ है, और जब पैसा नहीं मिलता है तो इस तरह की हरकतें होती हैं। कानपुर में जहां पर ये घटना हुई, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। हमेशा से पता नहीं कब से इस तरह से दुकानें लगती हैं, सब्जियां लोग बेचते हैं, और ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ये दरअसल तमाम शहरियों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। इनके बिना आप किसी शहर की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो आपको आपके घर के आसपास आपकी जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा ये कहना साफ है कि ये बेहद जो हमारी सरकारों का एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसका प्रतीक है। ये कानून के प्रति जो उनकी उपेक्षा है उसका प्रतीक है। गरीबों के प्रति जो रवैया है ये उसका प्रतीक है। और हम बहुत जोर देकर ये मांग अपनी पार्टी की ओर से करते हैं कि इरफान को नौकरी दी जाए, उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं उनकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए, और जो कानून है रेहड़ी पटरी संरक्षण अधिनियम 2014 उसका प्रदेश में पूरी तरीके से उसे लागू किया जाए। जी। Right. I'll come to you, Tina Kapoor Sharma, on the points that Dr. Pankaj Srivastava has made. Number one, of course, he's pointing out that this rule had come. Why has it not been implemented as yet? On the other hand, of course, you know, the police are there to be protecting the citizens. But the way clearly those visuals have shown in terms of how downtrodden people are being treated in the state. Your comment on that? I'm deeply hurt, Dr. Pankaj is stating all this. 2012, I also come from Uttar Pradesh, and 2012, you know, Supreme Court has come up on this, and Pradhan Mantri has initiated this Yojana. This is called SUSV, which is, you know, street vendor support system. And I have the data with me. If you want me to read out, I'll read out, because I don't remember the data exactly, so I should not go haywire. Otherwise, there's a street vendors Atmanirbhar Yojana, which has been there. Ministry of Housing and Development has been launching, they've already launched the street vendor program for this, and that's in the process, I must tell you. And there's another instruction had come from the NDA, you know, the Chief Minister, Shri Yogi Adityanath, that no poor street vendor or any poor guy should be part of such kind of atrocity when it comes to taking off the you know, street whatever, I mean, things selling on, sitting on the street. That should not be handled the way it's been handled in this case or some other cases. I don't disagree to that there are cases which happens, and these can be cannot be different from other cases. But yes, these are just few numbers which should not be done. I am again, you know, underlining that should not be done. If this case has been done by the police, and there's a police who is accountable for this, they should be sacked, not just suspended. They should be sacked from the services. I come from services background, and I strongly feel that, you know, there's a larger responsibility towards the government for a civil servant. And also, this family should be 100% supported, because this guy has lost his legs. But I don't agree with the, you know, Dr. Neeraj on this, because he's a Congress spokesperson, will not give you the right picture on the screen because they want to malign the government. But yes, I'm you know, more. I feel that, you know, people should know that there has been things, or support system has been created by the UP government. But yes, the level of work which government has done, these people will not come on television and appreciate. There's another program which is, you know, PM Swanidhi, which is also for these street vendors. I can count on multiple schemes which are there for these people. And this is very wrong to say that, you know, there's hardly anything. There are atrocities on the people. I know it's a very large state, equivalent to 3 states.
I come from Uttar Pradesh. I was born and brought up in Uttar Pradesh. I've seen the system, how system has worked before, Yogi Adityanath government. That also we've seen. I don't want to comment on that, but yes, going ruthless, sitting on the TV channel doesn't suit a spokesperson of the responsible party. I mean, that's what I want to say. But yes, on the contrary, I would say that there are multiple schemes: food security, housing. There are multiple schemes for these people. Vendor scheme has also been launched. 2012 was the year when Supreme Court has given the judgment on the street vendors, and SUSV is the scheme which Pradhan Mantri himself launched, standing in the Uttar Pradesh with CM Yogi Adityanath. So I think sitting on television, we should not lie on this. This is my final comment on this. Thank you. All right, Dr. Tina Kapoor of the BJP condemning the entire incident. But on the other hand, thank you Tina Kapoor Sharma, Pankaj Srivastava, as well as Ghanshyam Tiwari for talking to us on Mirror Now and giving us your inputs on this particular horrific incident that did come out of Kanpur in Uttar Pradesh.